বাকিরা কোথায় গেল? একজন জয়েন হয়নি শুধু। এক সেকেন্ড একটু ওয়েট কর। হ্যাঁ, স্যার, হ্যাঁ বল।
স্যার আপনি ক্লাস করাচ্ছেন না ওখানে? কোথায়? ক্লাসরুমে রাহুল আর ওরা দাঁড়িয়ে আছে, ফোন করেছিল যে ওটা বন্ধ আছে। উপরে 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 আসতে হবে ওদেরকে। ওরা এসছে? ও আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ ওরা ওদেরকে বল এসেছে, উপরে ওটাই চলে আসতে। ঠিক আছে স্যার। হুম হুম।
everybody can see the screen, guys? Everybody can hear me? Yes, sir. Okay, fine. All right, so like I have said before, I have asked you guys to come prepared with your JavaScript, PHP and MySQL, right? So we won't be needing MySQL today, but in the next class we are going to need, but JavaScript and PHP we are going to need today, all right? So we are going to start with your web application penetration testing. In the previous class, we have already seen how you can find out some hidden directories of a web page, right? For enumeration purposes, right? Now, apart from that, let's start with the first basic attack that we can perform on a web page, that is cross-site scripting attack, okay? Now, let me explain this attack and what it is going to do. All right, so let me just use Notepad++ only, okay? So we have cross-site scripting attack, okay? Now, as the name suggests, what we are going to do, we are going to inject maybe a script or a malicious script rather, okay, into a web page or a website. All right, that is your main funda. Inject a malicious script into a website. Okay. Now, generally, this script is going to be based upon a JavaScript. So basically, we are going to inject JavaScript based malicious files. JavaScript-based malicious files. Now, this JavaScript is going to execute on the client side, right? This is not going to get executed on the server side. It is going to get executed on the client side. So you are basically not attacking the web page, but the users of that website. All right. So keep in mind, guys, this is not a direct attack on the web page, but this is the direct attack on the users of that particular website. All right. So where can we inject such things? So what does this mean basically? Say, for example, if you have a web page, okay, and the web page is designed in a pretty normal fashion. Say, for example, let's take a simple web page. If I show you guys this. So let's take a simple web page over here, okay, which has been built by some company, okay, and there is a search bar, or maybe there is some data there, okay, and there are some buttons there, and etc, etc. Okay, it's a normal web page, okay, there is a scroll bar, etc. This is a normal web page looks like. All right. Now, what can happen over here is, say, okay, so let's consider this web page also has a comment section. Let us imagine that this web page also has a comment section. Okay, so you can basically comment about something and post it. Now, if you post it, what will happen? The comment gets embedded on the web page, right? So whenever someone else is opening that web page, your comment is visible there, right? Just like YouTube comments, right? So if you comment, if you're writing something, everybody can see it. So whatever you are writing, that becomes a part of that web page, right? So what if, instead of writing normal text, you write some kind of a JavaScript there. All right. So what will happen? Then what will happen? If you write some JavaScript code there, say, for example, if you write something like script alert, okay, it's just a alert pop-up, whatever. If you write something like this, what will happen? This particular line of code will get executed on the client's side. Okay, that means anyone browsing to this web page will have this JavaScript executed on their browser. And if that happens, then what will happen? What will be the result? You can basically execute any malicious code on the client's web page, on the client's browser, right? And that might result in complete system takedown and also reversal. You can also get RC there. Okay, you can basically get RC XSS RC from XSS as well. Okay, XSS is the short form of cross-site scripting. All right. So this form of attack is generally called stored XSS, which is the most critical of the cross-site scripting attacks. Okay, stored XSS, where basically whatever you are writing is getting stored on the web page. All right. And if proper sanitization is not there of the user input, then what might happen? You can basically write some kind of a JavaScript code there, and anyone browsing to that web page will also have that code executed in their browser. Getting my point? Right, guys? Because what is your JavaScript? JavaScript is basically a script which gets executed on the browser side, right? On the client side. So if I'm writing some kind of a malicious JavaScript code over here, say we are going to test it with using just a single pop-up over here like alert one. If I can just execute a single line of code, basically you can execute a complete malicious code there, right? So in that way, we can test a web page for any kind of cross-site scripting attack. Now, if that is happening, that means what is the end result? End result is we can basically write a malicious code there, and that gets executed on the client end. Got it, guys?
So anyone visiting this web page will have that particular payload executed. All right, and it's very, very critical. Recently, even Apple to this, even you can find this kind of vulnerabilities in Google, Facebook, Apple. Okay, like, to be honest, completely avoiding cross-site scripting is pretty difficult. You can do it, but it is really, really difficult. Okay, you have to sanitize each and everything out there. Okay, so any kind of interaction with the web page, wherever user can change any particular thing while requesting or doing anything on the web page, is vulnerable to this kind of attack. Okay, so you have to keep two things in mind. If you are trying to find this kind of vulnerabilities on a web page or anywhere, you have to keep two things in mind. First, whatever you are giving, your input should get reflected somewhere. Should get reflected. Reflected means whatever you are writing, whatever you are doing should be shown on the web page somewhere. Okay, this is your first fix. Whenever, yeah. স্যার যেরকম মিডিয়াম বলে একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে নিজের পোস্ট বা ইয়ে করা যায়, ওই রকম ওয়েবসাইটে করা যাবে না এগুলো? ওরকম ওয়েবসাইট, these are most vulnerable there. Okay, this kind of website are most vulnerable to this kind of পোস্ট যেখানে করা যায়, গেস্ট পোস্ট, হ্যাঁ গেস্ট পোস্ট করা যায় যেসব ওয়েবসাইট গুলোতে গেস্ট পোস্ট করতে পারে, whatever, যেখানে তোর ডেটা, wherever your data is getting stored or wherever your data is getting reflected, that is the main point. Wherever your data is getting reflected, there is a high chance that there is a stored XSS or other type of XSS. We'll come to different kind of XSS. There is a cross-site scripting attack. Okay, wherever your data is getting reflected, so whatever you are typing is getting shown on the web page, including, you can imagine about Facebook, you are writing a comment that is getting shown by everyone, so anybody can see your comment, whatever you are writing there, right? So you can imagine if Facebook had this kind of vulnerability, तो अगर मैं वहां पे कोई भी stored XSS का payload लिखता हूं या फिर कोई भी XSS का payload डालता हूं, that will get executed all over the world, anyone who is browsing to that web page, right? So that is what cross-site scripting attack is. Okay, even recently Apple had one of these vulnerabilities. It was called universal XSS. So what was happening, that XSS was present in their browser itself. Okay, so someone modified the Safari browser, okay, and kept it that way. What happened, that Safari browser का जो backend code है वो पूरा change हो गया, वो stored हो गया. ठीक है, उससे क्या हुआ कि हर एक डिवाइसेस में that payload was getting executed, हर एक एप्पल के डिवाइस में, starting from iPhone, iPads, MacBooks, everywhere. Anybody using that Safari browser is getting infected. Okay, so at that level you can basically harm using cross-site scripting attacks. Okay, so it is one of the most critical attacks out there. So this is the first thing that you need to keep in mind, that your input or whatever you are writing should get reflected in the first place. Okay, this is the one thing. And the other thing is, not only any kind of input. Okay, you have to, whenever you are testing for this kind of attack, keep in mind any area of the web page, wherever user can interact with. Okay, should be checked. Okay, any area, wherever, कहीं पे भी हो वेबसाइट के कोई भी जगह पे जहां पे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है और उसका जो इंटरैक्शन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वेब पेज पे, डेफिनेटली टेस्ट फॉर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स. ऑलराइट, I will come one by one. I will come. এটা প্রিভেন্ট করতে এমন করা যায় না, পুরো কমেন্ট সেকশনটাকে এজ এ কমেন্ট, মানে যেই ইনপুট করবে ওটা এজ এ কমেন্টে ভিজিবল হবে. কমেন্টে ভিজিবল হবে মানে কি সব কমেন্টসে আসবে? তা তো আসবেই না, যেমন ডাবল স্ল্যাশ আছে ওটা তো আসবেই তো না. ওটাকে মানে কমেন্ট করে তারপর বোল্ড করা যায় না যে ভিজিবল হবে? Comment, once you comment a piece of code, it gets neglected completely. So if you are commenting in a comment, so it is not going to get reflected. So if it is not getting reflected anywhere, then obviously there is no cross-site scripting. Definitely there is no cross-site scripting because the functionality is not there. Right? হ্যাঁ আমার কাছে তালা নাই তো তালা ভাঙবো কি? ঠিক আছে, তালাই নেই, দরজাই নেই, তাহলে আমি ভেঙে কি করব? Kind of that, right? So you have to keep these two things in mind. Okay, these are golden words, guys. Okay, you have to keep these two things in mind if you are testing cross-site scripting attack anywhere. Okay, anywhere. Just a moment, guys. A second. All right. Now,
Now, cross-site scripting attacks are of three types. Okay, one, you have reflected XSS. XSS means cross-site scripting. That is the short form of cross-site scripting. You have stored XSS, and finally you have DOM-based XSS. DOM XSS. Okay. Now, what is DOM, guys? Anybody? DOM? Okay, so DOM is basically document object model. Don't worry, it is not in your syllabus. Okay, it is a little bit difficult exercise that you can perform. Okay, but I will show you one of the examples out there. Okay, so there are basically three types of XSS there. You have reflected XSS, you have stored XSS, and you have DOM based XSS. Okay, now reflected XSS is not that much harmful in nature. Why? Because reflected XSS उतना harmful नहीं है. कारण ये है कि like यहाँ पे जो हम लोग malicious script अपलोड करेंगे या फिर जो भी malicious script हम लोग यहाँ पे डालते हैं cross-site scripting attack के लिए, that gets reflected only on the attacker end. Okay, that means anybody else visiting that particular web page will not get infected. Only जहां पे इसको execute किया जा रहा है सिर्फ वहीं पे infected रहेगा. Okay, example. Say for example, you have a web page with a simple search bar. Okay, जैसे होता है ना e-commerce web pages में ऊपर search bar रहता है ना? तो search bar में क्या होता है? Now, there can be other vulnerabilities in search bar, but we are at this point of time we are talking about XSS here. So in this search bar, whatever I am searching, say for example I am searching for pens. Okay, so what will happen is it's gonna show me all the pens, right? So ये जो मेरा word है, ये मेरा user input का area है, right? So what is happening in the backend? यहाँ पे जो data यहाँ पे user ने डाला है, that is getting processed somewhere, like something like if user input equals to pens, then what is going to happen? We are going to list down all the data about pens. This kind of logic is working in the background of a web page, right? What will happen if I give something like script alert script? Okay, so instead of writing pens, we are giving a JavaScript code there. Okay, so what may happen? Since obviously it is not going to find out anything regarding this, what may happen? Sometimes you will find that in some web pages, से कहीं पे अगर सर्च बार है, ठीक है, और तुम ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो जो कि नहीं है उनके पास, they might tell you that search ये नहीं है. Okay, something like this is not found. Okay, whatever you are writing there, this is not found. So if you write something like script alert in there, so obviously that particular part will also get reflected in the output. So that part is not found. So whenever that code is getting reflected in the web page, it will create a pop-up. Okay, that means what it is gonna execute my JavaScript at that place. But ये जो मेरा JavaScript यहाँ पे execute किया है, ये सिर्फ मैं देख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दुनिया में और कोई नहीं देख सकता. Because anybody going to that particular web page will only see the normal web page with the search bar, right? Because हमारे पास ही होगा. So that is your reflected XSS. Okay, as you can imagine, it is not that much harmful क्योंकि ये अटैक जो है ये सिर्फ वहीं पे हो रहा है जहां पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है ना. ये हार्मफुल किस सिचुएशन में हो सकता है? से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे किस सिचुएशन में ये हार्मफुल हो सकता है. से देयर इज अ वेब पेज व्हिच इज let's imagine Facebook is vulnerable to this reflected XSS. Okay, now somebody has logged into Facebook. Okay, and Facebook के ऊपर एक सर्च बार है जहां पे वो फ्रेंड्स को ढूंढ सकता है. Okay, if you want to send a friend request, you can search with the name and then you can send the friend request to someone else. Okay, now that guy after logging into his Facebook went to somewhere else and you have his system access. Okay, now वहां पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? In the search bar, if Facebook had XSS, तो वहां पे instead of searching a normal friend's name, what we can do, we can basically give a script alert there, a JavaScript payload there, or JavaScript whatever. We can write something like document.cookie. So what it is going to show? It is going to show me the session ID or the cookie value of that particular user. Okay. So अगर ये XSS वहां पे execute कर रहा है तो मेरे को क्या होगा? मेरे को एक pop-up मिलेगा या फिर मेरा जो JavaScript है वो execute करेगा on the system, and क्या होगा कि I can fetch information about that particular user. ये मेरे लिए beneficial कब होगा? Say for example, after I have got the session IDs and all, after that I have got the cookies, I can basically try to log in to Facebook in his Facebook account using my system without using his username passwords. Cookies हो सकता है. Cookies से बहुत कुछ हो सकता है.
ओके आई विल शो, अगर टाइम मिला तो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है, जहां पे आई वोंट नीड यूजर नेम पासवर्ड, आई जस्ट नीड द कुकी वैल्यू। ओके, मैं कुकी डालूंगा, आई लॉग इन, ठीक है, मेरे को यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ही नहीं, व्हाटएवर। तो दिस कैन बी परफॉर्म्ड इन मेनी वेब पेजेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस इज हार्मफुल इन दिस सिचुएशन ओनली, अदरवाइज इट इज नॉट दैट मच हार्मफुल। ऑलराइट, सो रिफ्लेक्टेड एक्सेस सिर्फ तुम ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। हार्मफुल कौन सा है, स्टोर्ड एक्सेस, इट इज रियली रियली क्रिटिकल। Okay, if you get stored XSS somewhere, then that is really really critical. Say for example, whatever search you are doing, that is getting stored somewhere. Okay, that this guy has done this search. Okay, or maybe like comment section is there where you can comment about some things. Okay, or maybe something like say for example registration, where you basically put your name, your email address, your password, etc. Okay, instead of registering with your actual name, अपना नाम देने की जगह पे I can actually put a malicious JavaScript there. So whenever it is showing me that yes, registration successful and this is your data, so तब क्या होगा, वो that data is getting reflected at that position. So anyone browsing to my profile will see that pop up. समझ में आ रहा है? Say for example, just imagine Facebook में ये stored access है, तब क्या होगा कि say for example कोई Facebook के पेज पे register कर रहा है पहली बार, ठीक है, तो अपने नाम के जगह पे उसने क्या किया, script and he put a JavaScript there. ओके, डाल दिया, वहां पे अपना फेसबुक अकाउंट बन गया, है ना। तो फेसबुक अकाउंट जब भी बनेगा तब क्या होगा, उसका नाम कहीं पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, तब क्या होगा, दैट जावास्क्रिप्ट कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? सो एनीबडी ब्राउजिंग टू हिज पर्टिकुलर प्रोफाइल और सर्चिंग फॉर हिज नेम विल गेट अ पॉप अप एवरी टाइम और गेट दैट एक्सेस एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ दैट इज व्हाई स्टोर्ड एक्सेस इज क्रिटिकल, क्योंकि ये हर जगह पे एग्जीक्यूट होगा। जहां जब भी यूजर उस लोकेशन पे जाएगा, कोई भी यूजर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर यूआरएल will face that problem, will face that attack in his browser. Okay, so for that reason your stored XSS is really harmful. All right, DOM based XSS are rare to find, मिलना मुश्किल है। DOM based XSS में भी तुम्हारा reflected and stored अलग अलग होता है। You have DOM based reflected XSS, you have DOM based stored XSS, concept same है। DOM क्या है? DOM कुछ नहीं, it is something related with the document object model. Okay, I will come to that one later on. मैं थोड़ा सा explain कर दूंगा। अभी के लिए इन दोनों चीजों पे फोकस करो। You have reflected XSS and you have stored XSS. यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि reflected XSS and stored XSS में अटैक करने का तरीका सेम है। अटैक करने का तरीका भी सेम है, जहां पे अटैक होगा शायद वो जगह भी सेम होगा, ठीक है, लेकिन अफेक्ट विल बी डिफरेंट, इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट। रिफ्लेक्टेड एक्सेस में क्या होगा, ओनली यू कैन सी द अटैक। स्टोर्ड एक्सेस में क्या होगा, एवरीबॉडी कैन सी द अटैक। गॉट इट? दैट्स द ओनली डिफरेंस between reflected and stored. So if you are practicing, if you are performing XSS somewhere, okay, or you are bypassing something, if you are practicing XSS somewhere, doesn't matter if it is reflected or not, ठीक है, क्योंकि reflected XSS का जो भी पेलोड हम लोग यूज करेंगे वही सेम चीज हम लोग stored में भी यूज करेंगे। ओके, दोनों के लिए things will be same, there will be no difference. Got it guys? We will see some example, don't worry. इनमें client side है ना? हाँ, सारे के सारे attacks will be on the client side. Now obviously from stored XSS you can leverage server side attacks. Okay, if there is Node.js running, you can basically leverage server side attacks, and later on you can actually get RCE also. ठीक है, remote code execution भी कर सकते हो। That is why stored XSS is very very harmful, very harmful. Okay, you can actually perform IDOR there. You can account takeover भी होता है stored XSS से। Like if you guys do not believe me, just take a look at this one. I will always recommend you guys like start reading these kind of reports. If you just find HackerOne stored XSS, these are bug bounty sites guys. Okay, these are bug bounty sites where people find bugs regarding different web pages, different companies, and they report it online, and these companies they reward them. Okay, you can see he has got $700 out of it. Here you have stored XSS. Okay, you can read this like how he has, this is an example of DOM based XSS. Okay, image src equals to x, and imagine he tried to put an image there, but since there is no resource, it is gonna get an error. So whenever that image upon loading gets an error, he is gonna execute this particular
alert. That means what? A JavaScript is getting executed, right? So you can imagine, always recommended, read these kind of reports. They are really, really good. You can find others. So many different things are there, right? You can basically read about this one, stored universal accesses in Apple. Okay. Read about this one. You can see इसी साल में हुआ था जनवरी के महीने में, and that person who got this much amount of money as a bounty, $100,000 उसको मिले हैं. Okay, so you can imagine कितना पैसा उसको मिला होगा, ठीक है, just by finding an universal accesses, ठीक है. Where do you have to report it if you get a bug? If you get a bug, it varies basically. जैसे Apple का you have to mail it, ठीक है. HackerOne जैसा है, ये एक platform है जहाँ पे you will find different organization. They keep their web pages there so that you guys can test. They have certain rules and regulations that you have to follow while testing. Okay, so you can create an account over here and you can start testing upon different web pages. You find bugs, you report them, you get rewarded for that. Okay, so HackerOne is one of these platforms. You have Bugcrowd, you have Integrity, so many other platforms are there. Okay, so if you wanna explore your क्या कहते हैं talent in bug bounty, then definitely you guys can go for this one. Right? Take a second, guys. Yeah. All right. There are many such reports available out there. All right, now let's take an example of where this attack happens and how this attack happens in real life. Okay, so I'm going to give you a very small example over here because it is not possible to show you all the examples at this point of time. For that, we'll be using different labs out there. Okay, so let's try to see a simple example. तो एक काम करते हैं, guys, don't worry about the code. ये सब code तुमको जानने की जरूरत नहीं है. Just concentrate how this attack is happening. Okay, that's it. Don't worry about the code, guys. Okay. All right, so मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ. Let me start this Apache server. Yeah, Apache will be enough. So I'm going to create a PHP page where this kind of exercise is going to happen. Okay, so I'm going to create a front end and a back end as well. So एक काम करते हैं, I'm going to create a folder here. Don't worry guys, ये सब तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ example दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? XSS. Let's make a folder. I will name this as reflected. I'm not going to show you stored. Stored हम लोग देख लेंगे क्योंकि एक same ही है. We'll see reflected, which will basically, you know, is in align with the stored. So इसके अंदर में As a localhost, I can also access the website, no? Yes. I can become the victim also for like, No, reflected में जहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिर्फ वहीं पे होगा. You can see real time now. Okay. So fine. I'm gonna save this. इसका मैं नाम दे देता हूँ से index.html. It's a simple HTML file. I'm going to create a simple HTML file, guys. ठीक है? So simply just HTML. Okay, simple HTML code है भाई, ठीक है? अलग से explain करने के लायक कुछ है नहीं यहाँ पे. I'm going to create a head tag. I'm going to give it a title. Let's make this reflected XSS. Okay. I'm going to create a body over here, and inside this body I'm going to create a form, and the action will be I will be submitting this somewhere, say somewhere around, say okay, XSS 01.php, whatever. I'm going to save this in a PHP file. And the method, okay, let's start with the get method. Okay, simple form is there. I'm going to create a table. Simple HTML, guys. Nothing much
nothing, you know, difficult. Make this center. I'm gonna create a TR, and in here I'm gonna give something like, you know, एक सिंपल सा एग्जांपल बना रहे हैं जहां पे से यूजर अपना नाम देगा, ठीक है, और हम लोग लिखेंगे वेलकम, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ओके, TR नहीं होना चाहिए था, माय मिस्टेक। Enter your name. I'm gonna take a TD over here as well and gonna give input. Type will be text, and I will just give it a name. Say name equals to say uname, okay, which is basically going to be a username. All right. So username का जगह है यहाँ पर, ठीक है, input area है, and यहाँ पे हम लोग एक और काम करेंगे, that is we are gonna give it a button over here so that user can submit this data. हाँ, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, and I'm gonna put it over here, and ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ. I will keep it submit. I'll keep the name to be submit. Okay, and I'm gonna keep the value to be something like click me. Click me. Whatever. It's a simple web page, guys. Fine. So, ठीक है. XSS01.php मैंने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। तो let's go to, okay, I'm gonna use a different browser over here, so I'm gonna use Firefox. I hope everybody can see the screen, guys, online, offline. Screen दिख रहा है ना सबको? Fine. Yes, sir. So what I'm gonna do, I'm gonna go to localhost. Obviously, you guys can. I think I can. What is my IP over here? 1.23. So I can definitely go to 192.168.1.23, and the location is XSS reflected. So here is the web page. Okay. So मेरा काम क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखेंगे, से टोनी स्टार्क यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एंड क्लिक मी करने से क्या होगा कि मेरा जो है वहां पे लिख करके आएगा कि वेलकम टोनी स्टार्क। ओके, स्लो प्रोसेस ओ अच्छा, ये तो स्क्रीन टास्क ट्राई टू स्लो प्रोसेसिंग হয় না সময় দেখ একবার যদি আটকে যায় তাহলে আমি মারিস नॉट फाउंड। ओके, सो व्हाट इज व्हाई दिस इज नॉट फाउंड, ऑब्वियसली बिकॉज़ ये है ही नहीं। ओके, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है ना, सो यू गेट नॉट फाउंड ओवर हियर, राइट, व्हाटएवर। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोना क्रिएट अ PHP पेज ओवर हियर न्यू। ये तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। টেবিলটা শো হবে না, ইওর নেম এটা কি কি মানে এই টেবিলটা যেটা বানালে ইওর নেম যেটা ওটা save as. So I'm gonna save this htdocs xss reflected के अंदर में इसका नाम हम लोग दे देंगे xss01.php। I think यही नाम दिया था मैंने। So save, देखते हैं xss01.php, yes, xss01.php, fine. So what is happening over here, guys? So whatever name I am putting over here, whatever the user input is, it will get sent to this particular file, .php file, using get method, okay? And ये जो डेटा जाएगा वो किस नाम से जाएगा, वो इस नाम से जाएगा, uname के नाम से जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो PHP में हम लोग क्या करेंगे, we will get that data now, PHP, right? So pretty simple code. So यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक वेरिएबल ले रहा हूँ, से var, okay, you can take whatever variable you want, underscore get. So get हम लोग यूज कर रहे हैं, and uname से हम लोग डेटा को उठा रहे हैं, ठीक है। And simply I'm gonna just print it out, okay, एक एको करेंगे, say welcome, and then the name of the user, ठीक है, pretty simple. So I'm gonna do var over there, and maybe I will give a br tag over here. And okay, let's make this a little bit bigger. So I'm gonna make this h1,
and let's make this close h1 over here and a br tag there. So I'm going to close this h1. So br tag is here so that a line, actually line change करने की जरूरत नहीं है, जाने दो. We don't need a line change. It's going to come in h1 and I'm going to make this a line center again. So welcome, the value, and then the h1 tag getting closed. So pretty simple PHP file. Okay. So let's see क्या निकल के आता है. So if I go to say localhost XSS reflected, here is my web page over. अच्छा मैंने इसमें खोला था ना, sorry Firefox. Let me open this in Firefox क्यों खोल रहा हूँ कि कभी-कभी Chrome यहाँ भाग जाता है. So I'm gonna give here Joker and let me click this and you can see welcome Joker is coming up, right? So let's go back. A pretty simple application guys, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ say Iron Man, okay, whatever I write, once I click here, welcome Iron Man. So it's a simple example, ठीक है. बहुत ही simple सा web page है. यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, once I click on this button, it gets reflected. Alright. Now मैं इसको एकदम तोड़ के समझा रहा हूँ. Now look at this guys. Wait. Let me do one more thing. Stored क्या होगा? Say for example अगर मैं इस नाम को किसी फाइल में स्टोर करता and then वो जो welcome दिखा रहा है उस welcome का जो value है वो अगर मैं उस फाइल से उठाता then it would have become stored XSS. So कोई भी नाम दे रहा वहां पर if he is giving a XSS payload, that payload will get stored in the file and every time the page loads up the welcome जो है वो उसी फाइल से उसको उठाने की कोशिश करेगा. जैसे उसको रीड करेगा every time that ये will get executed. Exactly. Database नहीं, file. Okay, do not a database. All right. Fine. तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक और चीज करना चाहता हूँ. Just give me a moment, guys. Let me show you this in Bobsuit as well. कि internally चल क्या रहा है. Just a moment. ये मेरा नया सेटअप हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट मार दिया इसको और दैट रीजन यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ओके अच्छा बाप रे बाप बहुत छोटा आ रहा है. एक सेकेंड. Let me change the font size. Yeah, 17 is fine, I guess. So let's go ahead and see what is happening. So मैं यहाँ पे पेज को reload कर रहा हूँ. Let me just erase this thing and me reload this page. The page has been got reloaded. Now if you look at Bobsuit over here, this is the web page, right? This is the web page. And here we have our request that is going, okay? And here we have the response that we have got, right? So if I send this to repeater, get request, and you get the page, okay? Now let's give a name over here, right? Say for example, if I'm giving here, say Batman, okay? I clicked on here and welcome Batman is coming up. Now let's look at Bobsuit again. If you look at over here, this is your request. You can see uname पे Batman जा रहा है. समझ में आ रहा है? uname पे Batman जा रहा है and backend में क्या हो रहा है? मैं उस uname को capture कर रहा हूँ. As a result, I can get the value of Batman there and I am placing it over here. If you compare this with the code, that is what is happening over here, right? That is what is happening over here, and we are getting this as the output, right? And you can see whatever the value of this uname is, that is getting reflected over here. Got it, guys? So that is getting reflected over here. इसका मतलब ये हुआ, what will happen if I give something like see JavaScript getting executed.
समझ में आ रहा है guys? Everyone? That means what? Instead of giving a normal name, if I give a JavaScript payload, say for example, if I type here like you have been hacked, okay, JavaScript payload, यहाँ पे मैं सिर्फ alert function को use कर रहा हूँ. अगर मैं एक function को execute करा सकता हूँ, that means I can write the complete JavaScript code over here, right? So if I click over here, you can see you have been hacked is getting popped up. That means what? JavaScript is getting executed. Got it, guys? समझ में आ रहा है? This is your reflected XSS, cross-site scripting. Okay. Now, if you look here closely, देखो uname का जो value है, वो देखो मेरा क्या जा रहा है? That is the payload that I have given for cross-site scripting. Instead of giving an actual name, I am giving this value. समझ में आ रहा है? ठीक है? अगर तुम बबसूट पे जाओगे, same thing can be viewed from here as well. You can see instead of uname, I am sending this particular value. Don't worry, यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है क्योंकि this is URL encoded, okay? क्योंकि URL में तो कोई स्पेस नहीं होता है, हम लोग देते हैं, लेकिन जब वो जाता है बैकएंड पे तब स्पेस नहीं होता है, बीच में प्लस आ जाता है. जितना भी स्पेशल कैरेक्टर है, they are represented by their URL encoded form, like %22, %2e. These are your URL encoded form. उससे रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक स्पेशल कैरेक्टर को. That is why यहाँ पे देखो %3c है, which basically represents greater than symbol. Okay. Then you have %3e, which represents less than symbol. Got it? So that is what it is. You can see हम लोगों ने जो लिखा था that is getting popped up over here, and you can clearly see that a script tag has been included right over here. दिख रहा है? वो स्क्रिप्ट टैग जो है जिसके अंदर में हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वो सारा का सारा चीज कहाँ पे है? इसके अंदर में आ गया. This is your reflected XSS. Now imagine this data is getting somewhere saved in the background. So every time this page gets loaded up, that gets executed every time. And every time someone visits to this web page, it will get reloaded again, and that payload will get executed again and again. Got it? So that is your stored XSS. समझ में आ रहा है XSS क्या हो रहा है, कहाँ पे हिट कर रहा है XSS? Okay. Now keep in mind guys, not only user input, ठीक है, सिर्फ user input चेक नहीं करना है जब भी तुम लोग चेक करोगे, बिकॉज देखो कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट में सबसे वल्नरेबल जगह होता है यूजर इनपुट का एरिया, दैट इज थिंग्स लाइक दीज, राइट? नाउ नॉट ओनली चेक दीज गाइस, यू शुड आल्सो चेक द URL. ओके, यहाँ पे जो URL है उसके पैरामीटर्स होते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, you can see PHP question mark, then you have this parameter called uname, and then whatever data I have written, it is going over there. So you can basically perform that same attack right over here as well. So यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, doesn't matter, I can actually perform this attack right over here. अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, say script alert test, same thing is gonna happen. Got it? समझ में आ रहा है? मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? Because sometimes you will see that ये जो मेरा फ्रंट एंड वाला पार्ट है ना, ये कभी-कभी सैनिटाइज रहता है फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड. मैं जावास्क्रिप्ट से आई कैन सैनिटाइज दिस, बट ये सैनिटाइजेशन है, मतलब आई कैन रेस्ट्रिक्ट द यूजर इन इनपुटिंग एनी काइंड ऑफ अ स्पेशल कैरेक्टर. जैसे ही वो ग्रेटर देन साइन बैठाएगा, इमीडिएटली दिस विल गेट इरेज्ड. ये फ्रंट एंड साइड में मैं डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फ्रंट एंड साइड में यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, after submitting this, definitely that thing will come to the URL. If it is coming to the URL, right, it may come to the URL. Now यहाँ पे definitely कोई भी sanitization नहीं है, तो what I can do, I can just omit this and give my payload over here without any restriction. समझ में आ रहा है guys? So सिर्फ user input की जगह पे टेस्ट नहीं करना है, URL पे टेस्ट करना है, ठीक है? और क्या हो सकता है? हो सकता है कि the data that you are sending, it's not going in the URL. Say for example, instead of using get method, the user is using post method. Okay, so if I use post method over here, and if this data is going via simple post method, then definitely you are not going to get any kind of an URL now. Let me refresh this. Let's try out. Say Joker, I am typing. Click me. You can see. अच्छा, ये अभी तक reload नहीं हुआ है. Okay, ये अभी तक reload नहीं हुआ है. एक second. So sizing should not matter.
think I need to restart the server once. Okay, my application is working fine. Now if you look closely, there is no data in the URL. Okay, अब सोचो URL पे डेटा नहीं है, ठीक है, एंड फ्रंट एंड में मेरा सैनिटाइज है, यू कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर हियर, जैसे ही दे रहे हो ऑटोमेटिकली आउट हो जा रहा है, ठीक है। नाउ हाउ यू आर गोना परफॉर्म दिस अटैक, चलो देखते हैं किसके दिमाग में क्या आता है। मैं इस अटैक को कैसे परफॉर्म करूंगा, हाउ विल आई बाईपास दीस टू रेस्ट्रिक्शंस। ऑब्वियसली मेरे पास अभी यूआरएल में नहीं है, ठीक है, एंड फ्रंट एंड में भी मैं डाल नहीं सकता क्योंकि ऑल द स्पेशल कैरेक्टर आर गेटिंग ओमिटेड बाय द फ्रंट एंड सैनिटाइजेशन। हाउ कैन आई बाईपास दिस सिचुएशन गाइस, क्या लगता है? सर कंसोल में जा, कंसोल, व्हिच कंसोल? F12 में। इंस्पेक्ट में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका आंसर वो दे सकता है who actually understands web, how web pages works. देखो कोई यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सिंपली अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स आर वर्किंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। So I have used post method. How can you do anything with it? जो भी आ रहा है मन में, क्या लगता है? लेट्स सी किसके दिमाग में क्या क्या आइडिया आ रहा है। Anything? Anyone? अच्छा चलो, जो होगा पहले उसी को पहले करके उसके बाद अंदर जाने से जो कैरेक्टर हाँ बोलो, सपोर्ट करेगा उसी को पहले एंटर करके उसके अंदर उसके बाद अंदर जा सकते हैं। फायदा नहीं होगा। इफ यू गिव समथिंग लाइक जोकर, तो बस प्रिंट ही करेगा। if you click over here you will get nothing. What else can you do? नहीं लिख सकता है। URL में है ही तो नहीं कुछ भी। So उसके अंदर अच्छा, PHP तो चल जाएगा। wait, tell me one thing guys, post method में डेटा कैसे जाता है? get method में like I said the way the code was working, like I am writing it something over here, I am clicking on click me and obviously this data, ये जो जोकर मैंने लिखा है, this needs to get sent to the backend server, है ना। वो उसको प्रोसेस करेगा मतलब वो उसके सामने एक वेलकम डालेगा, उसको लार्ज करेगा, उसको मिडिल पे लाएगा एंड इट इज प्रिंटिंग इट। क्लियर? अगर मैं गेट मेथड यूज करता हूं तो ये डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में कैसे जाता है? HTML फाइल में वहां पे वैल्यू जाएगा, उसके बाद PHP में जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, HTML से PHP में कैसे जाएगा डेटा? Like from the front end to the back end, how it will go? uname तो वैल्यू से जाएगा। Correct, but how? uname नहीं जाएगा। अगर मैं get method यूज कर रहा हूँ, then how that is getting sent? The way. कुछ देर पहले एग्जाम्पल देखा, URL में। इस पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग गेट मेथड यूज कर रहे थे, वो जो यूनेम का जो वैल्यू दैट वाज गोइंग टू द बैकएंड वाया द URL, राइट? बट दिस टाइम इट इज नॉट गोइंग वाया द URL बिकॉज आई एम यूजिंग पोस्ट मेथड, राइट? आई होप पोस्ट मेथड सबको पता है, राइट? सो पोस्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं ना। तो अगर गेट मेथड में URL से डेटा जाता है तो पोस्ट मेथड में कैसे जाता है? ऑब्वियसली डेटा जा रहा है ना, तो पोस्ट मेथड में कैसे आता है?
सर मैसेज बॉडी मतलब मैसेज बॉडी कैन यू एलेबोरेट थोड़ा सा और? सर जहाँ इनपुट डाल रहे हैं वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। मैसेज बॉडी नहीं। व्हाट डू यू थिंक? गेट मेथड में आई कैन अंडरस्टैंड यूआरएल में मेरा डेटा जा रहा है, वो जो यूनेम है दैट इज गेटिंग सेंड वाया द यूआरएल टू द बैकएंड। तो फिर पोस्ट मेथड में जब मैं ये काम कर रहा हूं, सेम थिंग इज हैपनिंग इन पोस्ट मेथड, राइट? तो पोस्ट मेथड में जो हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे यूनेम कैसे जा रहा है टू द बैकएंड? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, बिकॉज ये जो वर्किंग है इसी के पीछे इसका राज छुपा हुआ है। ठीक है, वो जाएगा ही नहीं मेरे हिसाब से, वो डायरेक्ट स्टोर कर देगा। अगर नहीं जाएगा तो वो बैकएंड को समझ में कैसे आएगा कि क्या नाम दे रहा है? हाउ विल ही फेच द डेटा? सर कुकीज से कुछ? कुकीज नहीं স্যার এইচটিটিপি এর বডিতে রিকোয়েস্ট করলে পাঁচ দিক হিসেবে বেরিয়ে গেলি একদম। আর একটু এলাবোরেট করতে পারবি? মানে যেখানে এইচটিটিপি এর পেজটাতে আপনি বডিটা লিখেছেন ওখানে পোস্টের যদি রিকোয়েস্টটা করি, মানে এটা তো হচ্ছে আমার এটা, তাহলে কি করতে হবে বল? যেখানে এইচটিটিপি এর আপনি এটা লিখছিলেন না পোস্ট দিয়ে, এটা তো আমার ব্যাকএন্ড কোড, আমার কাছে থাকবে না, এটা তো তোর কাছে থাকবে না। এইটাতে হ্যাঁ এখানে এটা তো তোর কাছে থাকবে না, এটা তো ওয়েব পেজের কোডটা। কোন ওয়েব পেজের কোড তুই দেখতে পাস না, তাহলে ইন্সপেক্ট করে কোড ব্যাকএন্ড এলিমেন্ট থেকে কিছু করা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ বল। ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট থেকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট দিয়ে কি করবি? ওখান থেকে তো রিকোয়েস্ট পাঠানো যায় না, ওখান থেকে ওটা কি ডাইরেক্টলি ওটা হয়ে যায়? কি করতে হবে বল ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট থেকে? তোরা দুটো মেন কথা বলে দিচ্ছিস কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা জায়গা থেকে বলছিস। আই ওয়ান্ট দ্যাট কম্বাইন্ড। নরমাল কিছু লেখা না, হ্যাঁ হ্যাঁ নরমাল কিছু টাইপ করে বিনা ক্যারেক্টার হবে। Where is the data going? How the data is going? PHP में जा रहा है, ये तो डायरेक्ट फाइल में वहां से जा रहा है ना, यूनियन का वैल्यू से वो डायरेक्ट जो वैल्यू जा रहा है वो डायरेक्ट वो फाइल में जाके स्टोर हो रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, वो जा कैसे रहा है? यूआरएल में गया, गेट मेथड में यूआरएल में जाएगा नहीं ना? नहीं, पोस्ट मेथड है ना, पोस्ट मेथड में नहीं जाएगा, यूआरएल में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा? वो फाइल जो डाटा है उसमें जाएगा ना, स्टोर कैसे जाएगा वही तो पूछ रहे हैं। कैसे? मैं फाइल क्या डाल रहा हूँ, कौन सा फाइल डाल रहा वो हूँ? xss.xss01.php। हाँ वही, कैसे जाएगा वहां पे? वहां पे जाएगा, डेफिनेटली जा रहा है। गेट मेथड में यूआरएल से डेटा जा रहा है उसमें, है ना? पोस्ट मेथड में कैसे जा रहा है? If you find out this, you find out the answer to this one. बोल दूं? पोस्ट में तो ये भेज रहा है, अब बोल दूं? वो पूछ रहा है। ओके देखो, तुम लोगों ने ऑल ऑफ यू गाइस हैव ट्राइड रियली गुड, ओके, लेकिन तुम लोगों ने कुछ लोग मतलब जो प्रॉब्लम जहां पे गलती हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। किसी ने बोला रिक्वेस्ट भेजेंगे, करेक्ट। किसी ने बोला है सर बॉडी में रखेंगे, वेरी गुड। लेकिन दोनों को कंबाइन करके किसी ने नहीं बोला रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा जाता है। लेट्स सी, ये होता है मेरा रिक्वेस्ट, करेक्ट। सो इफ आई एम यूजिंग पोस्ट डेटा, ये रहा मेरा यूनेम। गेटिंग माई पॉइंट? इन द रिक्वेस्ट बॉडी दैट डेटा गोज, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, एंड ये मेरा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर में पैरामीटर है। गेटिंग माई पॉइंट? नॉर्मल गेट मेथड में क्या हो रहा था? इफ यू लुक एट द नॉर्मल गेट मेथड, ये तो डायरेक्ट यूआरएल से जा रहा है, उसमें क्या हो रहा था? डायरेक्ट यूआरएल से जा रहे थे हम लोग। ये देखो डायरेक्ट यूआरएल में जा रहा था डेटा। बट इफ यू लुक एट द पोस्ट मेथड, you can see the data is going in the request body, okay, जो request हम लोग कर रहे हैं उसके थ्रू से जा रहा है। keep in mind the value of the ये is same, parameter is same,
मतलब पैरामीटर में जा रहा है. So if I have to perform an XSS there, if I want to perform cross-site scripting there, that means what? I have to first of all modify this request body and then I have to send it. Got my point, guys? अब देखो ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. एक, I can use Bob suit और I can use inspect element directly. मैं इसलिए पूछ रहा था inspect element में कैसे करते हैं. ये देखो, if you want to perform this in inspect element, ये थोड़ा सा tricky है. This is gonna work in Firefox only. जब हम लोग ये जो वेब पेज का जो है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं इंस्पेक्ट से. नहीं, मैं रिक्वेस्ट से जो सेंड कर रहा हूँ उसको मॉडिफाई करके सेंड कर रहा हूँ. ओके, क्योंकि सर्वर जो है जो वहां पे लिसन करता है, ही डजंट नो एनीथिंग. उसको जो भी मैं सेंड करता हूँ उसके हिसाब से वो मेरे को रिप्लाई देगा. ठीक है, तो दिस इज माय यूजर, दिस इज माय यूआई. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेवलपर मोड खोल रहा हूँ. नाउ इन डेवलपर मोड दिस इज माय एचटीएमएल फॉर्म, राइट? यू कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर हियर. ये नॉर्मली दिखता ही है सबको, लेकिन जो पीएचपी कोड है वो मेरे को नहीं दिखेगा कभी भी, जो बैकएंड कोड है, राइट? बट इफ आई गो टू नेटवर्क ओवर हियर एंड इफ आई रिलोड दिस, then I can see all the requests that is going from my end to the backend server. इसको मैं थोड़ा सा zoom in करता हूँ. This is the request which is going from my side to the backend server that is running, right? Now if you look at the request over here, obviously यहाँ पे request में कुछ है नहीं क्योंकि ये get request है. Now let me write something over here. Say something like Joker and let's click here. Okay, you can see here we have the post request. If I click over here, you can see uname पे क्या जा रहा है? Joker in the request, right? And if you look at the header, these are all the headers that are going. If I go to the request body, this is the request data or the request body. इसमें देखो ये uname जा रहा है Joker. Now what will happen? What will happen? Let me just go back once again. Okay. और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करता हूँ and I will, what I'm gonna do? I'm gonna stop it in the midway. ठीक है. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? Once I click on this, let me just stop this. एक second, let me just, I will resend this data, but I am gonna edit this first. So I'm gonna select this. Interrupt नहीं होगा यहाँ पे, but resend किया जाता है. Okay, so I'm gonna right click on this one, and इसको हम लोग क्या करेंगे? We will just go to headers. We'll click on. Wait, where is the edit and resend, guys? स्लो होच्छे ऑनलाइन में कर लेगा ना उसमें. अच्छा ठीक है, मीट में ज्वाइन कर जाओ. Okay, so what we can do over here is, ये मेरा post request है ना, जहाँ पे मेरा डेटा जा रहा था. What I can do, I can right click on this one and click on resend. तो क्या होगा? मैंने जो post request send किया था वो फिर से send होगा. Again it will get sent. But this time before sending you have the facility to edit it. This is your request. This is your post request जो तुम send कर सकते हो. अगर मैं नीचे की तरफ आऊँगा, here I have the body, the request body, where I have written Joker. So instead of writing Joker, अगर मैं इसको फिर से resend करता हूँ with Batman, that will get reflected here. So if I hit Batman and click on send, okay, you can see here is a post request with the Batman over here, right? So अगर मैं इसको double click करता हूँ, you can see we get the same result. समझ में आ रहा है? Now what will happen if I open up the developer mode, reload this page, and in the post request इसको right click करके मैं इसको कर देता हूँ resend, and instead of Batman what I'm gonna do, I'm gonna give the payload over here. Okay, if I click on send, obviously it has been sent. The moment I double click on this, it will get executed and you can see the access is getting popped up. This is one of the way, guys. It may seem a little bit difficult, लेकिन बॉब सूट से ये और भी आसान हो जाएगा. देखो बॉब सूट से अगर तुम करोगे, हाँ सेम ही चीज है. बॉब सूट से इट विल बिकम मच इजियर. देखो बॉब सूट से अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले बॉब सूट में हम लोग क्या करेंगे? इफ यू गाइस रिमेंबर, वी कैन एक्चुअली स्टॉप एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, राइट? करेक्ट.
तो इंटरसेप्शन को मैंने ऑन कर दिया यहाँ पर ताकि मैं उसको कैप्चर कर सकूं. And in here I wrote anything. Say I wrote admin over here. Whatever I can write. I can now click over here and you can see that it is loading. Why? The interception क्या किया? वो उसको capture कर लिया. Now once this has been captured, mute. Okay. Here we have the data. Now instead of typing admin over here, we can give script alert. You can write whatever you have been hacked. Okay, don't worry about the spaces. I will tell you how to modify that. Okay, तो मैंने ये लिख दिया. लेकिन इसी फॉर्म में अगर सेंड करोगे, then you will get an error. Why? Because this is not URL encoded. Because server will only understand URL encoded form. So what I can do, I can just select this whole thing and press Control U. Automatically it will get converted into URL encoded form. Control U. So once that has been done, we can go ahead and forward that packet and stop the interception. And let's test. You can see the pop-up over here. Getting my point, guys? समझ में आ रहा है? देखो, hacking is not rocket science. Okay, it's all about understanding how things are working and finding out different ways to perform tasks. That's it. Nothing else. Core concept को लेकर के ही काम होता है. Okay. So this was one of the way that you can perform accesses, right? So let me just close this. सबको समझ में आया cross site scripting क्या है, guys? I have shown you with a simple example. Okay, creating a simple web page and a simple application. Is it clear up to this point, guys? यहाँ तक clear है सबको? ठीक है? Okay. All right. So let's see some areas where we can practice things. All right, sorry. Now to perform this kind of task and to test out your skills, we can basically grab some labs. उसके लिए मैं बोलूँगा, sir, look for web for pen testers. Okay, just search it online, web for pen testers, and you'll find it in the first link over here. First link पे जाना. यहाँ पे तुमको एक ISO फाइल मिलेगा, ठीक है? उसके लिए just go to files, and here you will find the file which is just 172 megs. बहुत ही छोटा सा फाइल है. एप्लीकेशन भी काफी छोटा है, सिर्फ एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे डिफरेंट वेज ऑफ एक्सेसेस आते हैं. ओके, वी विल टेस्ट देम आउट. ओके, ऑलराइट, एक बार ये बूटअप हो जाए, देन आई विल एक्सप्लेन क्या करना है क्या नहीं. All right, so here we have our ISO file. You can basically host it in your virtual box. Okay, I have VMware at the moment, unfortunately. तो ये VMware में ही मैं कर रहा हूँ इसको. So what I'm gonna do? अच्छा, VMware वाला already खुला हुआ है, I guess. हाँ, खुला हुआ है. तो एक second, guys. I don't need Kali basically. You can see like web pen testing. You can actually do in Windows directly. ठीक है? It's all about interacting with the website. Nothing to do with Kali Linux or anything like that, right? So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? We are just gonna create a new virtual machine. Next, I'll install this later on. It is a Linux-based operating system, Ubuntu 64. Same thing तुम लोग को भी करना है VirtualBox में. Next, choose any location that you guys prefer. I'm gonna save it over here by the name. अच्छा चलो इसके अंदर ही सेव कर देते हैं. I'll just name this as web for pen testers. So web for pen testers. And you don't have to install this. Rather, you can just boot it directly. मतलब हम लोग live boot करेंगे इसको. Web for pen tester. Next, 20 GB is enough. RAM मैं बोलूँगा कि like 512 दे दो भाई, चलेगा, कोई issue नहीं है.
और ये जो साइज है हार्ड डिस्क का, यू कैन एक्चुअली गिव 10 gigs, डजंट मैटर, ठीक है। प्रोसेसर एक ही दे दो, काफी है, मोर देन इनफ, एंड इट शुड बी ब्रिज्ड, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो यहाँ पे हम लोग CD की जगह पे आई विल यूज दैट ISO फाइल दैट वी हैव डाउनलोडेड, सो आई एम गोना जस्ट कट इट फ्रॉम हियर, आई एम गोना पेस्ट इट समवेयर एल्स, एंड वहां से इसको बूट अप करेंगे, बेसिकली पुट इट ओवर हियर, एंड आई एम गोना ओपन इट फ्रॉम दिस लोकेशन, आई एम गोना क्लोज दिस, फिनिश, and that's it. We can power this on. We are not going to install this, we are going to live boot this, enter maar dena bas, that will be enough, and here you have the prompt. Okay, just type ifconfig to see what IP address you have got. So it's 1.238. okay, so 1.238, so you guys can also try जो local में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we'll अपना Firefox over here and I'm gonna switch off burp proxy. So let's go 192.168.1.238 and here is our lab. okay, यहाँ पे देखना काफी सारे XSS के examples हैं, okay, near about 9 of them. okay, it's an old lab. Example number 8 and 7, 8 and 9 does not work anymore. वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करते थे, अभी काम नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी rest of the 7 examples they work. I'm going to show you guys up to example number 4. okay, I will ask you guys to try 5, 6, 7 at home. It is not compulsory, it is up to you guys. If you guys want to try this at home, you are free to try, ठीक है। 5, 6, 7 you guys can try, लेकिन keep in mind 5, 6, 7 जो example है, these are gonna be difficult, not that much difficult. You have to understand JavaScript, then you guys can do it. okay, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7 स्लोली डिफिकल्टी विल इंक्रीज, ठीक है। सो लेट्स ट्राई आउट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज द इजीएस्ट वन आउट देयर। सो लेट मी जस्ट गो टू द फर्स्ट एग्जांपल। यू कैन सी दिस इज द वेब पेज, ओके, हियर यू हैव द URL एंड हियर यू हैव द वेब पेज। कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, हेलो हैकर इज द यूजर यूनिट, रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है Sir, name. What kind of input getting very good, name is getting reflected over here. Look at this name parameter, that is getting reflected over here. Getting my point? So if I type out something else, something like, you know, Joker, hello Joker, reflected, if it is getting reflected, getting my point guys, XSS process scripting, got it? So this is the simplest one out there. okay, example number 1 is just like the one that we have done before. Fine, let's go to example number 2. Difficulty will be increased now, same application again. okay, if I change this, say cool, whatever, you can see hello cool. okay, fine, let's try out our payload. Let's try. No result, no pop-up. JavaScript is not getting executed, right? How can we bypass this? कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम ऑलरेडी पेलोड दे चुके हो। बॉक्सवर्ड हम लोग तो कब यूज कर रहे थे, जब मेरा पेलोड सेंड कर नहीं पा रहा था। इंटरप्ट करके कोई लाभ है, बिकॉज यू ऑलरेडी यू कैन एक्चुअली गिव द पेलोड ओवर हियर, राइट, but it is still not working. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम you have to identify. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि this is not getting executed as it should have been. Why this is not getting executed, guys? Why do you think? क्या लगता है क्यों ये execute नहीं हो रहा है? नहीं, क्यों ये execute नहीं हो रहा है? What is missing? In the reflected area, what is missing? Correct. तो इसका मतलब क्या हुआ कि there is some kind of mechanism running in the back end which is basically omitting these two parts, right? So अगर मैं इन दोनों पार्ट को हटा देता हूं, will I get the same result? Let's see. Yes, I am getting the same result. That means what? Somehow it is basically erasing my scripts, right? Somehow it is erasing my scripts. मतलब script जो मैंने लिखा हुआ है वो ये erase कर रहा है ना? Now let us try out different methodologies to bypass things, right? Now देखो, there are various ways to bypass different restrictions.
जैसे यहाँ पे कभी कभी वेबसाइट में क्या होता है कि लाइक डेवलपर नो कि यहाँ पे क्रॉस स्क्रिप्टिंग हो सकता है, तो कोई भी अटैकर ऐसे स्क्रिप्ट मेथड से दे कैन ट्राई आउट क्रॉस स्क्रिप्टिंग. सो व्हाट दे डू समटाइम्स दे बेसिकली ब्लॉक द स्क्रिप्ट tag, right? Now to block the script tag there are different ways, right? जैसे in this case मैं ये यहाँ पे आंसर बोल दे रहा हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है basically what the developer thought, what the developer has done, developer has blocked the script tag, but keep in mind he has blocked just the script tag. मतलब जैसे हम लोग स्मॉल में लिखते हैं ब्रेसेस में, उसको वो ब्लॉक किया है. मतलब अगर वो ये वाला वर्ड देखेगा तो उसको ब्लॉक कर देगा. तो अगर वो दूसरा टैग भी ब्लॉक है, नहीं स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक है. ओके नाउ कीप इन, अब देखो क्योंकि स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक है. नाउ व्हाट एल्स, अच्छा चलो ये नहीं बता पाओगे, बता रहा हूँ. यहाँ पे क्या होगा कि लाइक ये स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक है. व्हाट कैन आई ट्राई आउट नेक्स्ट? लेट्स ट्राई आउट समथिंग एल्स. समथिंग एल्स मतलब वी विल बी यूजिंग स्क्रिप्ट टैग बट वी विल बी टेस्टिंग समथिंग एल्स. लाइक कि वो क्या उसने सिर्फ स्मॉल में ब्लॉक किया है, बिकॉज HTML इज केस इनसेंसिटिव. HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है. अगर वो सिर्फ स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक कर रहा है which is in small, that means if I do some kind of a camel casing, I should be able to avoid it. ब्लॉक नहीं करेगा. समझ में आ रहा है? ओके, गेटिंग माय पॉइंट गाइस. तो इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपर ने क्या देखा कि सिर्फ स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक करना है, उसने सिर्फ स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक किया. वी कैन बाईपास इट इन दिस वे, राइट? ये बंद करने के लिए बहुत अलग-अलग कॉम्बिनेशन देना होगा. हाँ, वो नहीं होगा, है ना? अब मैं आ रहा हूँ, धीरे-धीरे आ रहा हूँ. ओके, नाउ दिस इज योर सेकंड लैब. ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन. ओके, same application again. So if I write something else over here, Joker, same application. Obviously if I try out the first method, definitely it is not gonna work क्योंकि यहाँ पे भी obviously script is blocked, right? Obviously the script tag is blocked, not gonna work. Same thing is happening over here, right? What about camel casing? Let's try out camel casing. Not gonna work because this is also blocked. What else next? मतलब क्या हुआ, जो डेवलपर है उसने स्मॉल, मीडियम, लार्ज सारे के सारे स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक कर दिए, है ना? लोअर केस, अपर केस, कैमल केस, सारे के सारे केसेस उसने बंद कर दिए. ठीक है, व्हाट एल्स कैन द हैकर डू? इसके लिए बहुत ही मतलब मिस्चीवियस टाइप का लाइक मेंटालिटी होना चाहिए. ठीक है, इसको अलग-अलग तोड़-तोड़ के करने से होगा. वेरी नियर. ओके, देखो, वेरी गुड, एक्सीलेंट ट्राई. देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्क्रिप्ट टैग दिया गया है, सारे तरीके से ब्लॉक कर रहा है. व्हाट इफ आई गिव मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग्स? कितनी बार ब्लॉक करेगा? देखो HTML टैग्स में क्या होता है कि क्योंकि कैमल केसिंग है, दूसरी तरफ क्या होता है कि लाइक HTML टैग्स जो अगर वो ब्लॉक कर रहा है, अगर उसको उड़ा रहा है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक समथिंग जिससे क्या होगा कि अगर वो स्क्रिप्ट टैग को उड़ा देगा, उड़ाने के बाद इट विल फॉर्म अ स्क्रिप्ट टैग. ओके, हाउ कैन आई डू दैट? वी विल राइट स्क्रिप्ट टैग विद इन द स्क्रिप्ट टैग. Okay, we are going to write script tag within the script tag. We're going to write script tag within the script tag, guys. तो वो तो पूरा omit कर देगा ना? वो मैं बता रहा हूँ, वो क्या देखेगा? It will look at script. ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो इन दोनों को उड़ाएगा. इन दोनों को उड़ाया, जैसे इन दोनों को उड़ाया, बाहर का जो है they will attach and it will form a script tag. ठीक है, hit enter. अच्छा वेट, आई थिंक मेरा स्पेलिंग में गलत हुआ है. हाँ, स्पेलिंग में गलत हुआ है यहाँ पर. ओके, गेटिंग दी पॉपअप गाइस. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपर ने जो ये किया था, जो क्या कहते हैं वैलिडेशन रखा था, वी कैन बाईपास इट, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट लैब नाउ. लेवल 4. लेवल 4 में सेम एप्लीकेशन इज देयर अगेन. ओके, if I type something over here, whatever, you can see it is getting reflected, same application again, but this time it is not gonna work even with multiple script tag. अगर मैं यहाँ पे script tag के अंदर में भी script tag दे दूँ, it is not gonna work, obviously, है ना? Okay, it's not gonna work. You can see the moment I give a script tag, it is gonna give me an error. That means what? यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हर एक तरीके का स्क्रिप्ट टैग हटा रहा है.
And whenever I'm trying to give any kind of script tag, it can understand that someone is trying to perform a cross-site scripting attack. As a result of it, it is giving me an error. It is not possible. Okay, that means what? I cannot use script tag at all. मैं script tag use ही नहीं कर सकता हूँ. What is the answer? यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? How can I perform cross-site scripting here, guys? Without using the script tag, how can you implement JavaScript? How can you execute JavaScript without using the script tag? That is the answer. देखो मैंने बहुत बड़ा hint दे दिया. And मजे की बात यह है कि तुम लोगों ने इसका आंसर देख भी लिया है. All you have to do is recall. तुमको मालूम भी है इसका आंसर क्या होने वाला है. Let's see किसके दिमाग में स्ट्राइक करता है सबसे पहले. How can I perform cross-site scripting in this situation? सर शुद्ध अलर्ट लिखे तापर नामटा लिखे दिले ना तर तो जावास्क्रिप्ट खोलो ही ना. If you just type here alert and give XSS over here, nothing is gonna happen. अलर्ट के लिए स्क्रिप्ट यूज होता है. हाँ जावास्क्रिप्ट है ना. जावास्क्रिप्ट के लिए you have to use the script tag. स्क्रिप्ट यूज करना ही होगा मतलब इसमें. हाँ तो उसके लिए अलग JavaScript के लिए you have to use you have to use script tag, but there are other ways to do JavaScript without using the script tag. That is what I am asking. How can you do it? This is the largest hint that I can give. Like मैंने आंसर बोल ही दिया है basically. And you guys have already seen the answer. All you have to do is recall. इसी क्लास में अभी मैंने बताया है इसका आंसर. कुछ देर पहले बताया इसका आंसर. Like दिखाया इसका आंसर, बताया नहीं. क्या लगता है? How can I do stuff? Guys, सिर्फ दिखाया नहीं है. जिसने मेरा बात माना है एंड W3 स्कूल में जाकर के जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा देखा है, that guy can also answer this question. In the first tutorial only you have this answer. Everything is connected, guys. सब कुछ बेस के ऊपर है. You have a strong base, you can bypass many things. क्या लगता है क्या होगा यहाँ पर? I cannot use scripts. बोल दूं? देखो. Look at this, guys. Let's go to W3 school first. याद है मैंने कहा था कि लाइक जावास्क्रिप्ट देख के आना, ठीक है? ये जावास्क्रिप्ट का होम है जो कि पहला ट्यूटोरियल है. If you look at the first example, try it yourself. This is the first example, right? Can you see script tag anywhere, guys? Can you see script tag anywhere? Then how is this JavaScript getting executed without the script tag? Got the idea? जैसे मैंने कहा, ठीक है. If you have learned things, if you have seen things, थोड़ा ध्यान से, you could have answered this question. ठीक है. It's all on the base. सब कुछ बेस पे है. इसलिए मैंने कहा था कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ all the basic things I want. Okay, just the basic things. If you look here closely, there is no script tag, but still the JavaScript is getting executed because ये रहा मेरा JavaScript जो उसने execute किया था, right? And that JavaScript is attached with an event which is on click. That means
I can basically use any tag. यहाँ पे बटन है, मैं कोई भी टैग यूज कर सकता हूँ apart from script, provided I have to use a event there. Okay? And to answer your question कि आज मैंने कहाँ पे बताया, if you guys remember, मैं कुछ देर पहले तुम लोग को HackerOne में stored accesses दिखा रहा था, है ना? If you look at the first report, okay, if you look at the first report, इस बंदे ने जो cross site scripting किया था, वो कहाँ किया था? I have also explained you guys how this is gonna happen. Image SRC कोई रिसोर्स है नहीं, एरर खाने के बाद वो अलर्ट आया. Getting my point, guys? Same thing is gonna happen over here without using the script tag. So if I am not using the script tag, I can just simply give something like image. Since I do not have any kind of a resource, I can just give XYZ, whatever, doesn't matter. On error, which is an event. Event के साथ मैंने bind कर दिया, and इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? I can type here whatever I want, right? So say for example, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ something like alert XSS. Okay, I'm giving something like this, right? कुछ भी दे सकते हो, कोई भी टैग चलेगा, तुम कोई भी टैग दे सकते हो, ऐसे इमेज में ही देना है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी टैग दे सकते हो, एनी टैग, किसी भी टैग, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू प्रोवाइड अ इवेंट, यू हैव टू बाइंड इट विद एन इवेंट जो कि एग्जीक्यूट हो. तो ऑन एयर ये इवेंट होता है. हाँ, ऑन एयर इवेंट है. हाँ, जब वो एरर खाएगा, ऑब्वियसली इट इज गोना गेट एन एरर. एसआरसी रिसोर्स में क्लिक के बाद एग्जीक्यूट होगा. हाँ, कर सकते हो, ऑन क्लिक भी दे सकते हो. ऑन एयर इसके जैसा और भी कुछ मतलब प्रीडिफाइंड हो रहा है. हाँ, बहुत है. ठीक है. Like if you guys have just told me this one, it could have been the right answer. Sir, button से कर सकते हैं, button में on click से कर सकते हैं. That is also the correct answer over here. ये button में on click करके भी हम लोग कर सकते हैं. Right? Got the idea, guys? Everything is hidden in the base, guys. ठीक है, सब कुछ basics पे ही है. ठीक है. तो that is your first four examples. Now you can imagine 5, 6, 7 कैसा होने वाला है. ठीक है. So try them out at home. ठीक है. नहीं होता है, don't worry. ठीक है. Try them out. देखो क्या होता है. All right. So that is all about cross-site scripting, guys. So आज हम लोग यहीं पे रखते हैं. Next class में we will start with SQL injection. Okay. Come prepared with database. Okay. Come prepared with database. Okay. ठीक है. SQL देख के आना. PSQL सेम होता है. PSQL कोई भी SQL देख के आओ. ठीक है. Postgres, MySQL, MS SQL, whatever. MariaDB देखना है, Oracle देखना है, जो भी हो देख के आओ, चलेगा. SQLite देख के आओगे तो भी चलेगा. ठीक है. क्लियर है गाइस? सबको समझ में आया? योर क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, चलो गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस. सी यू अगेन ऑन सैटरडे. ठीक है.